आंध्र प्रदेश के वजीर आला इन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में वेलकम गैलरी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सिंगापुर के वजीर भी मौजूद रहे। वेलकम गैलरी 50 एकड़ अराजी पर मुहित है, जिसकी तामीर पर 44 करोड़ खर्च किए गए हैं। वेलकम गैलरी को रियासत में तिजारत को फरोग देने के लिए बनाया गया है। इसी दौरान चंद्रबाबू नायडू ने अजला कलेक्टर्स के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इन्होंने जन्मभूमि माउरू प्रोग्राम का जायजा भी लिया। सीएम ने विशाखापट्टनम को लॉजिस्टिक हब बनाने का भी ऐलान किया। Asahi Glass, a Japanese global glass manufacturing company headquartered in Tokyo. So many things we have started here. Administrative capital is going on in a fast track. Trunk infrastructure is going in a big way. Even land pooling infrastructure we have developed. If we use technology and protect nature, we can do wonders. That is the best way of living. With the support of Singapore, with this experience center, we are going to get best practices, best technologies and best knowledge available all over the world for the benefit of our community. And we will showcase in such a way others can emulate, others can follow. Nowhere in the world this type of river, that too fresh water. Every year this river is irrigating nearly around 2 to 3 million acres of land. It is a perennial. Now we are linking rivers. Godavari water is coming to Krishna. From here it is going to reach Penna. All 5-6 rivers across the state, we want to link it so that all rivers will become perennial rivers. So water is energy. It is big energy for anybody to see water. That type of water is available. With the support of people like you, we wanted to build one of the most beautiful place to live in. Everybody should be very happy and proud to associate with this project. That we have our Singapore business delegation here who have had a meeting with their Andhra Pradesh counterparts as part of the business council between Andhra Pradesh and Singapore. And I think that is again another important foundation towards the growing relationship between our two countries. So I want to conclude by once again. आंध्र प्रदेश के वजीर फाइनेंस वाई डामा कृष्णोडू ने मरकजी हुकूमत पर मुल्क में वफाकी निजाम को कमजोर करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में रियासतों के एजेंडे को शामिल करने की भी मांग की। The council is pertaining to the whole country. So, Government of India has been saying that cooperative federalism. So here we don't see that cooperative federalism is strictly followed. So the GST council is fixed by the secretariat, which is under the control of the Government of India. Sir, any decision even without consulting the state governments. What I said in the council and all ministers also said the same thing. The agenda should be fixed in consultation with the state governments, because from states there are several issues which have to be taken up on the floor of the council. So that is agreed by the Union Finance Minister. Hereafter we consult all the state governments before fixing the agenda. That is the main issue. Our issues also should come before the committee. So this is the cooperative federalism they have been arguing. But strictly the spirit of cooperative federalism they are not following. That's what I raise. आंध्र प्रदेश के वजीर आपाशी डी उमा महेश्वर राव ने रियासत के अपोजिशन लीडर और सदर वाईएसआरसीपी जगन मोहन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी की जानिब से निकाली गई प्रजा संकल्प यात्रा को पार्टी का सफर आखिर करार दिया। रियासती वजीर ने जगन मोहन रेड्डी की जानिब से तेलुगु देशम हुकूमत को तनकीद करने की मजम्मत की। जगन मोहन रेड्डी गारी असत्याల ప్రచార హోరు నుంచి విముక్తులయ్యారు। అధికార వ్యామోహంతో ముఖ్యమంత్రి పదవి పిచ్చిబట్టి పవిత్రమైన పాదయాత్రను కూడా అపహాస్యం చేశారు। పాదయాత్ర సాధించిన ప్రగతి ఏంటంటే కోడికత్తి నాటకం। నీ మార్నింగ్ వాక్ ఈవినింగ్ వాక్
పాదయాత్ర పేరుతో పవిత్రమైన పాదయాత్రని అపహాస్యం చేస్తూ నీ మార్నింగ్ వాక్, నీ ఈవినింగ్ వాక్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ముగింపు వాక్ అయింది, ముగింపు యాత్ర అయింది। अदूनी में मोहम्मद अली शादी खाना की संग बुनियाद रखी गई। अदूनी के मोहम्मद अली पार्क मैदान में मुस्लिम शादी खाना की तामीर के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से 2 करोड़ 20 लाख रुपए मंजूर हुए हैं, जिसमें एमपी फंड के तहत 1 करोड़ रुपए बी रेणुका ने दिए हैं। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट बी रेणुका और साबिक रुकने असेंबली मीनाक्षी नायडू व दीगर मुस्लिम कायदीन ने शिरकत की। यहाँ आदोनी में शादी खाने के लिए 2 करोड़ 20 लाख का जो फाउंडेशन स्टोन आज डाला है, ये बहुत खुशी का और बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट है। यहाँ पर इतने सालों से 1.5 ईयर्स से हम बहुत कोशिश कर रहे थे। फाइनली ये आज फाइनली आज इट हैज टेकन अ शेप एंड हम बहुत खुशी, वी आर वेरी हैप्पी। आज आदोनी में मोहम्मद अली शादी खाना का 2 करोड़ 20 लाख रुपए सैंक्शन कर चुकी है गवर्नमेंट। उसमें से 1 करोड़ रुपए एमपी लैक्स, 1 करोड़ 20 लाख आके हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के। इसके इधर म्यूनसिपल एरिया में हार्ट ऑफ द टाउन में 40 सेंट्स भी जाई एलोकेट हो चुका है। उसका आज फाउंडेशन स्टोन हुआ। एक कॉन्ट्रैक्टर को एमपी मैडम और हम भी इंस्ट्रक्ट करे हैं 9 मंथ्स में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होना चाहिए। आंध्र प्रदेश अनएडेड स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने अदूनी आरडीओ दफ्तर पर एहतजाज किया। इस मौके पर जिला भर के मैनेजमेंट स्कूल करेस्पॉन्डेंट ने रैली का एहतमाम किया। यह रैली अदूनी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज से होते हुए आरडीओ दफ्तर अदूनी पहुंची। इन्होंने बंद के नाम पर तोड़फोड़ करने वाले तलबा तंजीम और कायदीन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। पहले अल्फा स्कूल आदोनी में वो स्कूल के ऊपर हमला करके वो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन वो स्टूडेंट्स को और किसी को डरा को और स्कूल का प्रॉपर्टी पूरा डैमेज कर को, लाखों रुपए डैमेज कर को, फिर वो स्कूल का मैनेजमेंट ऊपर केस रखने के वास्ते वो 2 दिन से कोशिश कर रही। लेकिन हमें 2 दिन ये कल हमें पूरा कर्नूल में हमें प्रेस मीट रखो, उधर भी हमें डीएसपी को, होम मिनिस्टर को हमें रिप्रेजेंटेटिव दिया। जो स्कूल है वो स्कूल में अच्छा पढ़ाई देने के, अच्छे वैल्यूज देने की हमें कोशिश करते, लेकिन गुंडा जैसा हमें काम कभी नहीं करते कि वो कोई करस्पॉन्डेंट पे ऐसा काम नहीं करते। उन हर दिन सुबह से रात तक, हर 8 बजे तक उन स्कूल में बैठ को बच्चों को पढ़ाई अच्छा पढ़ाई देने की अवश्य कोशिश करते। अदूनी डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले तलबा तंजीमों ने दफ्तर आरडीओ का घेराव किया और मुतालबा किया कि हुकूमत ऐसे खानगी इदारों पर कार्रवाई करे जो कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इस एहतजाज में मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों तलबा शरीक रहे। आंध्र प्रदेश के माहीगीरों ने इन्हें एसटी जुमरे में शामिल करने की मांग की। इन्होंने इस मामले पर तेलुगु देशम हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। चंद्रबाबू नायडू पर वादों से इनहराफ करने का भी इल्जाम लगाया। वादा पूरा नहीं करने पर आने वाले इंतखाबात में तेलुगु देशम को इख्तिदार से हटाने का इन माहीगीरों ने इंतबा दिया। రికమెండ్ చేస్తానని చెప్పి మాట ఇచ్చి 2 సంవత్సరాలు అయ్యిందండి, కానీ మళ్ళీ ఆయన మేము గుర్తు రాలే। మాకు మాట ఇచ్చిన తర్వాత ఇటు రజకుల్ని, వాల్మీకిల్ని, బోయిల్ని వాళ్ళని రికమెండ్ చేశాడు ఆయన, ఎస్టీలుగా, ఎస్సీలుగా, కానీ మత్స్యకారులు మాత్రం చేయలేదు। ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అన్ని కులాల కంటే వెనుకబడిన కులం ఏదైనా ఉందనుకుంటే ఒక్క మత్స్యకారులే। మరి అలాంటి కులాన్ని ఈరోజు కూడా వాళ్ళు కన్సిడర్ చేయకుండా ఒక కమిటీ వేశారు। కమిటీ దేనికంటే ఇది నాలుగు తీసుకోవడానికి, అది కమిటీకి వ్యాలిడిటీ ఏమని చెప్పండి। కమిటీ వేసి 4 నెలలు అయిందండి, ఇంతవరకు ఫండ్స్ రిలీజ్ చేయలేదండి। చంద్రబాబు నాయుడు గారు కళ్ళు తెరవండి। వారి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇంచుమించుగా 60 నుండి 70 సీట్లు గెలిపించే సత్తా మాకుంది। ఎంటైర్ కోస్తా అంతా కూడా మేము మత్స్యకారులు ఉన్నాం। మేము ఇప్పటికైనా సరే ఒక మంచి మనసుతో మీరు మాకు రికమెండ్ చేసి ఢిల్లీ పంపించినట్లయితే మీకు కొంత ఉపయోగపడుతుంది। లేదా विशाखापट्टनम के प्राइवेट स्कूल्स में बाबाए कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे बनाए गए। इन मुजस्समे को शहर के अहम इलाकों और तालीमी इदारों में लगाया जाएगा। इस मौके पर रियासती वजीर फरोग इंसानी वसाइल जी श्रीनिवास ने तलबा को बाबाए कौम की तालीमात पर अमल करने की तलकीन की।